Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the sixth lecture of this series of CPC. So we are continuing with section 9 in the previous lecture. We have to see certain examples on civil suits and suit of civil nature. The first one is the suit for the right to take out the religious profession. Profession is julus. The suit for the right to take out the religious profession. अब बताइए, is it a civil suit? Suit of a civil nature, and why? Now you see under Article 25 of the Indian Constitution, you have the right to profess your religion. Under Article 25 of Constitution, you have the right to profess your religion. And if you have the right to profess your religion, that includes to take out the right to take out. That includes the right to take out religious profession. Now obviously that is in a legal manner, in a lawful manner. Since it is a legal right given in Article 25, what you are claiming is right to profess a religion by taking out the religious profession. It will be considered to be a suit of civil nature. In fact, it is a pure civil suit because right to profess your religion is a pure civil legal right, constitutional right, fundamental right. Therefore, it will be a suit of civil nature. समझ में आया? That right to take out the religious profession is a part of your right to profess your religion. And since it is a right to profess your religion guaranteed by Article 25 of Constitution, so what you are claiming is a pure legal right. In fact, it is a fundamental right, and therefore that is a suit of civil nature. Technically, it is a pure civil suit. तो suit of civil nature में तो आएगा ये. Because you see, जब आप कहते हैं civil suit, I am reverting back to the original point. When you say civil suit, it is the pure civil right, civil legal right. And when you say the suit of civil nature, so it will be a civil suit, मतलब pure civil right, plus other socio-religious rights. But out of these two, you see the dominant factor, and therefore it is the suit of civil nature. तो जो प्योर सिविल सूट है वो तो आएगा ही इसमें. प्योर सिविल सूट है, दैट विल आल्सो बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, और साथ में सोशोलॉजिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व है, देन आल्सो इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, प्रोवाइडेड दैट द सिविल राइट इज अ डोमिनेंट राइट. क्लियर? नाउ द सेकंड वन, द राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल. बताइए, राइट टू वर्शिप, इट इज आल्सो सिविल राइट, देयरफॉर it is a suit of civil nature. Then next, the right of a Pardanasi lady, right of a Pardanasi lady to observe Parda. When you see Article 21, that is a matter of right to privacy. I am not only talking about a Muslim lady, her right to wear a burqa. I am talking about generally the Hindus also. घूंघट का जो concept है in the villages and elsewhere. So the Pardanasi includes some Muslim women wearing the burqa, but otherwise any other woman covering her face. So is it not a matter of right to privacy? Now it is a matter of her choice. She covers the face and all. It is a matter of her choice. In the Muslims also you find that the several women, they will be wearing the burqa, and several women they will not. Some women are only covering their head. Now it is a question as to कि इस्लाम में आपको चेहरा कवर करने के लिए मैंडेट किया गया है या सिर्फ हेड कवर करने के लिए मैंडेट किया गया. अब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, आई कैन नॉट कमेंट मच, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज दैट इस्लाम मैंडेट्स मुस्लिम वुमेन टू कवर हर हेड, द स्काल्प एंड द हेयर्स, इट शुड बी कवर्ड. फेस की ज़्यादा जानकारी है नहीं, वेदर इट मैंडेट्स और नॉट. whatever it be, if Islam mandates you, if to cover your face, so that is obvious that it is a matter of religious right. Suppose कुरान कहता है कि आप अपना चेहरा ढक कर रखो, then it becomes a matter of your religious rights. और अगर इस्लाम सिर्फ सिर ढकने के लिए कहता है और आप फिर भी चेहरा ढकना चाहते हो, then it is a matter of your legal right under Article 21. So anyone
So it is a matter of choice unless a person is committed a crime or hiding his face, वो अलग बात है. Otherwise it is a matter of a person's choice whether he or she, whether she does not want to show her face to the other world. She wants to keep herself hidden. So it is a matter of her life and personal liberty, her freedom of speech and expression. So these are all her legal rights. Right to privacy under Article 21, and therefore the right of a Pardanasi lady to observe Parda is always a matter of a legal right. Whether it is a religious or not, for that you have to explore the Islamic texts, and we are not discussing that here. But at least legal right तो होगा, because it is a part of Article 21, right to privacy. इसको लिख लीजिएगा, अक्सर पूछते हैं. आपको जो लॉजिक में बताता जा रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते चलिएगा. इसमें आप लिख लीजिए राइट द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड ऑल्सो इट इज ए पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19A. Hence it is a suit of civil nature. The right to privacy as a fundamental right under Article 21, and also it is a part of freedom of speech and expression under Article 19A. Hence it is a suit of civil nature. Hence this suit of a Pardanasi lady to observe Parda is a suit of civil nature. अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइट टू अडल्ट फ्रेंचाइजी. बताइए आप, अडल्ट फ्रेंचाइजी इज राइट टू वोट. तो 18 साल या उससे बड़ा व्यक्ति वोट कर सकता है. That is obviously a constitutional right. Article 326. Article 326 of the Constitution. So that is a constitutional right, a legal right, and therefore it is a suit of civil nature. So it is a suit of civil nature. Right to vote, constitutional right, legal right. अब हो सकता है आपके पीटी में इस तरीके से क्वेश्चन बना दें, whether right to vote is a legal right, fundamental right or constitutional right. So it is a constitutional right. Now next point, इसको लिख लो आप. A suit for reinstatement into a caste after he has been expelled. A suit for reinstatement into a caste after he has been expelled. अब देखो, पर से इसका आंसर होगा नो. पीटी में पूछते हैं तो आंसर शुड बी नो, लेकिन मेंस में लिखोगे तो पीटी के लिए आंसर इज नो पर से, लेकिन मेंस के लिए लिखोगे तो आंसर पर से. अगर आंसर सिर्फ रीइंस्टेटमेंट का है तो दैट इज अ सोशल राइट, नॉट अ लीगल राइट, देयरफॉर द आंसर विल बी नो. बट मेंस में आप जब लिखोगे तो इसमें एक चीज और अटैच कर देना, दैट इफ इट इन्वॉल्व्स some legal issues, right to food and shelter etc., then it will be a suit of civil nature. इसको भी लिख लो. right, simply reinstatement to the caste is not a suit of civil nature, as caste is a social phenomenon and not a legal phenomenon. As caste is a social phenomenon and not a legal phenomenon. But if because of the expulsion legal rights have been violated, legal rights के ब्रैकेट में आप लिख लो food, shelter, clothes etc. If because of the expulsion legal rights have been violated and the suit is primarily for those legal rights, then it is a suit of civil nature. Now next, suit for claiming contribution of funds for holding festivals. जो चंदा लेने के लिए जो होता है, जैसे मुझसे चंदा लेने के लिए आपने सूट कर दिया,
अब चंदा इज नॉट ए कंपल्सन, अब हम दे रहे हैं किसी को स्वेच्छा से देते हैं, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ कंपल्सन। बट सपोज मैंने अगर किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, और उस फेथ पर उन्होंने अपना ऑल्ट्रेशन कर लिया, मतलब कुछ ऐसी चीज कर ली जो अब वो पीछे नहीं हट सकते, कुछ चीजों को ऑर्डर कर दिया, कुछ खरीद ली। अब बताइए, नाउ इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। यस, नाउ इट इज अ केस ऑफ estoppel, quasi contract कह लो, you can call it a case of estoppel, in which upon my faith a person altered his position by doing whatever he has done, that I will give the money, and now I am retracting. Now the doctrine of estoppel binds me to give the money. But my question is very simple. My question is very simple, that is it a civil suit or suit of civil nature to file a suit for claiming compensations, for claiming contribution for some फेस्टिवल। अब जैसे मोहल्लों में दुर्गा पूजा, दशहरा, होली, दिवाली, उनके लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो उसमें चंदा वंदा मांगने आते हैं, तो उसमें काफ़ी लोग मना कर देते हैं, तो कैन दे फाइल अ सूट अगेंस्ट यू? द आंसर इज नो। बट लेकिन अगर आपने प्रॉमिस कर दिया ओरल या रिटन कि ठीक है मैं तुमको इतने रुपए दूंगा, मान लो 50,000 रुपये दूंगा, और उस आधार पर उन्होंने मूर्ति वगैरह ऑर्डर कर दी, मान लो दुर्गा फेस्टिवल था, उस आधार पर उन्होंने मूर्ति ऑर्डर कर दी उसी हिसाब से, और अब आप पलट गए। अब यहाँ पर इट इज़ नॉट सिंपली फॉर द कंट्रीब्यूशन, रेदर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ estoppel दे आर क्लेमिंग, दे आर सेइंग दैट कि आपके फेथ पर मैंने ऑल्ट्रेशन किया था अपने पोजीशन का, नाउ यू आर बाउंड टू गिव मी द मनी, एंड द मोमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ estoppel applies, it becomes a legal issue. But otherwise it is a pure matter of your personal discretion. No one can bind you to give the money, and therefore it is not a civil suit. इसको लिख लीजिए आप, write down. A mere suit for contribution of money for such a festival is not a suit of civil nature. However, if a promise has been made by the defendant to make the contribution, and on the faith of that promise the plaintiff had altered his position, the doctrine of estoppel will apply, and the defendant will be legally bound to make a contribution. Now it becomes suit of civil nature, and the defendant will be legally bound to make a contribution, and now it becomes a suit of civil nature. Now the next point, write down. The suit by Hindu wife for perpetual injunction to restrain her husband from getting into a bigamous marriage. अब बताइए, whether it would be a civil suit or not, suit of civil nature. The suit by Hindu wife for perpetual injunction to restrain her husband from getting into a bigamous marriage. Is it a suit of civil nature? The answer is yes, it is a suit of civil nature. Why I tell you, आपने पढ़ा होगा फैमिली लॉ में कि जब भी एक राइट, देखो जब वाइफ हस्बैंड के खिलाफ सूट करती है फॉर इंजंक्शन अगेंस्ट बाइगमस मैरिज, कोर्ट नॉर्मली परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। तो ये बताया मैंने आपको, इस पर कोई केस लॉज भी बताए इन द फैमिली लॉ क्लास, मैं बता चुका हूँ। लेकिन कोर्ट क्यों नहीं देगा परपेचुअल इंजंक्शन? बिकॉज यू हैव ए बेटर रेमेडीज अवेलेबल, you have a better alternative remedies available. You can go for divorce against him, you can get him criminally prosecuted, etc. So उस ग्राउंड पे कोर्ट आपको परपेचुअल इंजंक्शन नहीं देता, इस ग्राउंड पे नहीं कि इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, rather it is a suit of civil nature, but getting a remedy or not getting a remedy is another thing, उसके ग्राउंड्स अलग हैं। But whether it is a suit of civil nature or not, उसका आंसर is yes, it is a suit of civil nature. You see, again I am repeating,
क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एग्जाम में जैसे ही ये सवाल पूछोगे आप सीधा पहुंच जाओगे एसआरए में, आप लिखने लग जाओगे सी विल नॉट गेट द इंजंक्शन एक्सेट्रा, बट डोंट गेट कंफ्यूज देयर। यहाँ पर आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहे दैट सी विल गेट इंजंक्शन और नॉट, दे आर आस्किंग यू वेदर it is a suit of civil nature or not, and you should not confuse between the issues. Section 38 Specific Relief Act clearly कहता है कि you can file a suit for claiming an obligation for injunction against the obligation of opposite party, and obligation obviously has to be a legal obligation, and husband is under a legal obligation that as long as his wife is alive and the marriage continues, that he should not indulge into any activities which goes against the marriage. So getting into a bigamous marriage is also an activity going against the marriage. So legal obligation obviously is there that he should not get into a bigamous marriage. If he is planning to get into a bigamous marriage, and if wife wants to prevent him, she can certainly file a suit claiming perpetual injunction and restraint him from getting into the bigamous marriage. And now whether she will get a relief or not, that is a different issue. The court may grant the temporary injunction, but perpetual injunction ultimately उसको मिलेगा नहीं, because the reason being उसके पास और रेमेडीज अवेलेबल हैं, जैसे वो डिवोर्स ले सकती है, वो उसको प्रोसिक्यूट करवा सकती है, इसीलिए हम उसको परपीचुअल इंजंक्शन नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। इट इज़ अ सूट ऑफ सिविल नेचर बिकॉज द लीगल इशूज आर इन्वॉल्व्ड। व्हाट लीगल इशूज? द हस्बैंड्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एग्जिस्टिंग वाइफ not to get into a bigamous marriage. So since that legal issue is involved, it is not a pure social or religious issue. Therefore, it will be a case of suit of civil nature. इसको आप लिख लीजिए। Normally, right? Normally, a wife does not get a perpetual injunction against the bigamous marriage of the husband, but that does not mean that the suit is not a suit of civil nature. Rather, the issue involved is a pure legal issue. That is, the legal duty of the husband not to get into a bigamous marriage. The legal duty of the husband of not, या ऐसे लिखो, the legal duty of the husband to not to get into a bigamous marriage. So the issue involved is a pure legal issue. And what is that issue? The legal duty of the husband to not to get into a bigamous marriage. And hence, it is suit of civil nature. The court not granting perpetual injunction does not rob या seize. Rob means to take away. The court not granting perpetual injunction does not rob such a suit of its essential legal character. अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, उसको लिखते जाइए। जैसे राइट टू कलेक्ट एरियर्स ऑफ रेंट, इट इज ए प्योर सिविल सूट। देन उसके बाद राइट टू टेक डावर, द राइट ऑफ ए मुस्लिम वाइफ टू ऑब्टेन डावर, और डावर इज ए लीगल मैटर। अब शी इज कॉल्ड क्रेडिटर and dower is a legal matter, so it is a suit of civil nature. In fact, it is a pure civil suit. Then right to divorce, it is a pure civil suit. Then right to decent burial या decent cremation, बताइए मरने पर किसी व्यक्ति का decent दाह संस्कार या दफनाया जाना, obviously that is a civil legal right and that is also a pure civil suit. Then right to hold a religious office, अब ये पर से तो नहीं होगा, जैसे किसी समुदाय का महात्मा बन जाना। देयर इज ए ग्रुप, आप उसके महंत हो या महात्मा हो या जो भी उसके गुरु हो,
अब किसी भी रिलीजियस ग्रुप का गुरु बन जाना, दैट इज नॉट अ सिविल सूट। हाँ, अगर वो रिलीजियस ऑफिस इट इन्वॉल्व सम रिलीजियस राइट्स, जैसे वो वैष्णो देवी वाला केस था, if it involves some legal right, then yes. So per se in PT the answer will be no. But in mains you can always explain कि अगर उस religious office में कुछ legal rights involved हैं, then it will be a case of suit of civil nature. इसको भी लिख लो आप. Right. Per se holding a religious office is not a case of civil rights, as on the face of it does not involve legal issues. However, if it can be proved that the holding of such religious office also involves some legal rights, which are the dominant issues in the suit, then it will be a suit of civil nature. अब एक और लिख लो आप लास्ट इशू, a suit for reinstatement. reinstatement मतलब वापस करना, वापस रखना. A suit for reinstatement as a member of club if a person has been wrongfully expelled from the club. अब देखो ये डिपेंड करता है, अगर पीटी में आ जाए तो मेरे हिसाब से आंसर नो होगा इसका. अब ये डिपेंड करता है क्लब, किस क्लब, कैसे क्लब की बात कर रहे हो, कैसे क्लब और ऑर्गेनाइजेशन. अब क्योंकि जस्ट क्लब की बात कर रहे हो तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पर्सन, और क्लब के मेंबर होना अपने आप में लीगल इश्यूज पर से इन्वॉल्व नहीं करेगा. So depending upon what kind of club they are talking about, in the prelims the answer should be no. But suppose if you are a member of a club, you are a member of such kind of club in which their contribution is required, जिसमें पैसे देते, so in that the contribution of money has gone to become the member of that club, and the members are having certain legal rights there, and if a person is wrongfully expelled from the membership, then he is losing upon his legal rights. So his legal issues are also involved because his money was also involved there, and therefore if a person filed a suit for membership for reinstatement, then that will be a suit of civil nature, because here his legal rights are involved, because he has paid in that club, उसके पैसे गए. अब लेकिन मान लो सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपने एक क्लब बना लिया, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है या दोस्तों ने मिलकर कोई ग्रुप बना लिया. अब उसमें से किसी ने एक को निकाल दिया, एडमिन ने उसमें से किसी एक को निकाल दिया, तो क्या जिसको निकाला वो सिविल सूट कर सकता है उसके ऊपर? नो, क्योंकि उधर कोई पेमेंट वगैरह नहीं है. बिकॉज व्हेन द वर्ड क्लब इज यूज्ड, क्लब मीन्स द क्लब इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स voluntarily getting together to do something, voluntarily getting together to do something. तो क्लब का पर से मतलब ये नहीं होता कि मनी और लीगल राइट्स आर इन्वॉल्व्ड. सो पर से और पीटी में द आंसर विल बी नो, बट इन द मेंस द आंसर विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेंबरशिप इन्वॉल्व्ड, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द लीगल राइट्स आर इन्वॉल्व्ड और नॉट. द आंसर शुड बी यस. सो पीटी के लिए आंसर बता दिया, बट फॉर मेंस इट कैन बी सर्कमस्टेंशियल. सो मेंस में द आंसर ऑफ दिस इज सर्कमस्टेंशियल. लिख लिया आपने इसको. नाउ कम टू द पॉइंट, बार्स अपॉन jurisdiction. It is written the court shall subject to the provisions herein contained, means subject to the provisions of CPC. So one bar is subject to the provisions of CPC. Have jurisdiction to try all suits. Have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Either expressly or impliedly barred. Excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. So another limitation upon the jurisdiction of the court is the express and implied bar by some other statutes other than the CPC.
So bar of CPC covers in this portion, and other statutes bars are covered in this portion, and this is expressly as well as implied bar also. And as we know that every presumption should be made in favor of the jurisdiction of a civil court. When we are deciding a question whether a civil court's jurisdiction to enter into a suit is barred or not, we must keep into the mind that every presumption should be made in favor of the jurisdiction of the civil court. And the exclusion of jurisdiction of a civil court to entertain the civil cases should not be inferred unless the relevant statute contains an express provision to that effect, or leads to a necessary and inevitable implication to that nature. अब इस पर लिख लो पहले आप. Section 9 also provides for the jurisdiction of court being to the subject to the provisions of CPC. तो जो jurisdiction है कोर्ट का Section 9 में दिया गया है, that is being to the subject to the provisions of CPC as well as expressed or implied bars by any other statute or any other law. So जो jurisdiction है Section 9 का, that is subject to the provisions of CPC and as well as the expressed or implied bar by any other statute or any other law. There are expressed provisions in CPC also wherein there are expressed bar upon the competency of the court. So there are several provisions in the CPC which are expressly putting a bar upon the competency of the civil court. And some of the examples are the bar of res judicata, order to rule to, etc. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Now right, आगे लिखो. However, there may be certain special laws. However, there may be certain special laws in which also an express and implied bar upon the competency of the court may be found. So I told you the jurisdiction of the civil court is subject to the other statutes also. So there may be certain special laws in which also an express and implied bar upon the competency of the court may be found. And some of them are like the labor laws. इसके लिए लेबर कोर्ट होती है स्पेशल, and it provides a express bar upon the civil courts that the matter should be tried into the labor court only. So all matter relating to this law will be tried into labor court only. Then suit pertaining to income tax matters, that for that also the special courts are mentioned in that special law, like IT tribunal. So like that there are various other tribunals also. So there may be tribunals or any other authority which are having the jurisdiction of a particular upon the particular subject matter, and that power is given to them by the parliament by making law, special laws. अब what is the difference between the civil court and tribunal? देखो, अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर ट्रिब्यूनल कोई बनाई गई है या फिर कोई सच अथॉरिटी दैट इज मेड बाय द पार्लियामेंट बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग ए स्पेशल लॉ, सो दैट अथॉरिटी वॉज डिसाइडिंग अपॉन द मैटर्स ऑफ ओनली दो सब्जेक्ट मैटर. बट एक मेन डिफरेंस है सिविल कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में, इज दैट सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू डिसाइड द क्वेश्चन वेदर इट हैज ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन, डील with and decide the matter which has come before it. वो खुद ही डिसाइड करती है whether it has jurisdiction or not. सिविल कोर्ट तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. But the tribunal cannot assume and confer on itself jurisdiction which it does not possess. मीन्स ट्रिब्यूनल या अदर अथॉरिटीज के जो jurisdiction होगा वो हम उसको स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे, जबकि इधर सिविल कोर्ट्स का jurisdiction है हम उसको वाइडली पढ़ते हैं, उधर हम उसको स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे, एंड दैट वुड बी लिमिटेड टू दैट सब्जेक्ट मैटर ओनली. नाउ लेट्स सी अगेन. द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ व्हिच देयर कॉग्निजेंस इज either expressly or impliedly barred. What are express barred? Let's see it. What are the express bar with relation to the other statutes other than CPC?
So first of all, write upon it. There may be some special statute, law, under which on a particular subject matter a law has been provided, and it also creates a special courts to try the disputes pertaining to that particular subject matter. तो एक स्पेशल स्टैट्यूट बना दिया जाता है, स्पेशल लॉ होता है फॉर ए पर्टिकुलर स्पेशल सब्जेक्ट मैटर, फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. Okay, special statute is made for a particular subject matter, and in that law, that special statute, the special courts are also provided. That these are the special courts which will try this kind of matters or that particular subject matter cases would go into that special courts. तो पार्लियामेंट एक स्पेशल लॉ बनाकर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को स्पेशल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में दे सकती है, और वो स्पेशल कोर्ट उसको ट्राई, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड सारे केसेस को ट्राई करेगी. एंड दैट टू आल्सो प्रोवाइडेड इन दैट स्टैट्यूट. उस स्टैट्यूट में ये लिखा रहेगा कौन सी कोर्ट्स उसको ट्राई करेंगी, किस सब्जेक्ट मैटर को. देयर मे बी सम स्पेशल स्टैट्यूट law under which on a particular subject matter a law has been provided, and it also creates a special courts to try the disputes pertaining to that particular subject matter. Okay, if it is declared expressly in the statute that all disputes pertaining to that subject matter would be triable by the special court, then such declaration would be called finality clause or exclusion clause. अगर उसमें डिक्लेयर होगा, किसमें, स्टैट्यूट में, जो स्पेशल स्टैट्यूट बनाया गया है उसमें अगर डिक्लेयर किया गया होगा एक्सप्रेसली इन द स्टैट्यूट दैट ऑल डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू दैट सब्जेक्ट मैटर, जो भी डिस्प्यूट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से होंगे वुड बी ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट ओनली, देन सच डिक्लेरेशन, तो उस डिक्लेरेशन को क्या माना जाएगा, फाइनलिटी क्लाउज माना जाएगा. देन सच डिक्लेरेशन वुड बी कॉल्ड द फाइनलिटी क्लाउज और द एक्सक्लूजन क्लाउज. So finality means it is final that it is only triable by this special court. और exclusion means दूसरे कोर्ट का jurisdiction, सिविल कोर्ट का jurisdiction exclude कर दिया. तो पहले तो दूसरे कोर्ट्स का jurisdiction exclude कर दिया, and by the finality it is final that this subject matter is triable only by this court. अब if there is a finality or exclusion clause is mentioned in a statute with respect to a particular court or tribunal, it is clear that the ordinary civil courts will not have jurisdiction. And once that is declared, then that is what? That is an express bar upon the triability of that particular suit by the ordinary civil courts. आगे लिखो. To that subject matter would be triable by the special court, then such declaration would be called the finality clause or the exclusion clause. That is, by that declaration the jurisdiction of the ordinary civil court is excluded. It is in these cases that it can be said that there is an express bar upon the competency of the ordinary civil courts. So it is in these cases that it can be said that there is an express bar upon the competency of the ordinary civil courts. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, प्रोबेट कोर्ट्स, इंसॉल्वेंसी कोर्ट, लेबर कोर्ट, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, रेंट कंट्रोल मैटर्स जाते हैं, जो रेंट कंट्रोल डीएमआरसी कोर्ट है अगर दिल्ली में, तो दिल्ली रेंट कंट्रोल कोर्ट, एंड सो फोर्थ. अब वी हैड सीन दैट एक्सप्रेस बार upon the jurisdiction, exclusion and finality clause. Exclusion means कि दूसरे कोर्ट्स का jurisdiction exclude कर दिया, and finality means that it is final, that this will be triable only by this court. And we had also seen that if the finality or exclusion clause is mentioned in the statute with reference to a particular court or tribunal, then it is clear that the ordinary civil courts will not have jurisdiction, and once that is declared, then that is an express bar upon the triability of that particular suit by the ordinary civil courts. But there may be cases where there is not express bar. There may be cases where there is not expressly. They are creating a tribunal, but they are not expressly declaring
that the suits pertaining to this law will be triable by exclusively so and so court. But still you have to see the intention of the legislature. You have to see the terms and reference to that court. You have to see the overall purpose and policy of the statute. You will have to see the other provisions of the statute, and from there the remedies provided in the statute, and from there you have to infer the intention of the legislature as to whether an exclusive jurisdiction is intended to be created. बट नॉर्मली वैसे केसेस में टिल्ट जो होगा वो ये होगा कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं क्रिएट किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया होता तो वो अदरवाइज लिखते. फिर भी आप एक बार प्रोविजंस एग्जामिन करके यू विल सी whether exclusive jurisdiction has been created or not, and if yes, then you will say that there is an implied bar upon the jurisdiction of the other courts. Okay, अगर intention दिखता है तो ठीक है, then it is exclusive jurisdiction, then it would be an implied bar upon the jurisdiction of the other courts. अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पॉलिटिकल मैटर्स, प्योर डिप्लोमेटिकल रिलेशन, प्योर फॉरेन पॉलिसी इशूज. अब अदरवाइज ऑल्सो सेक्शन 9 में दे विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी these kind of matter will not consider to be a suit of civil nature because they are not related to legal rights. That is a matter of policy. Political right is not a legal matter as such. So इस तरीके के disputes अगर हैं, pure political disputes या diplomatic relations से related disputes या फिर आपका foreign policy से related dispute, वहाँ पे फिर the court will not have the jurisdiction and therefore will not be considered to be in fact that will not be considered to be a suit of civil nature. Otherwise also as a matter of policy there is a bar upon the triability of such disputes by the civil courts. इस पे भी लिख लो आप, right? If the statute does not expressly provide for exclusion of the jurisdiction of the other court, then it shall be examined in the light and the purpose of the law, the entire scheme of the statute. The remedy is available under the statute, then it shall be examined in the light and purpose of the law, or to be examined the entire scheme of the statute, and then remedy available under that statute is also be examined. Then the terms of reference to the court or tribunal under the statute as to whether the intention to create an exclusive jurisdiction for that particular court. तो ये एग्जामिनेशन करेंगे कि whether there is an intention to create an exclusive jurisdiction for that particular court, and this is called the implied bar. For example of implied bar is, if a matter is of a pure political dispute, then there is an implied bar upon the competency of the court, and otherwise also such matters will not be considered as a suit of civil nature. Similarly, if a matter pertains to diplomatic relations or foreign policy, then also it will, because of implied bar ordinary civil courts will not have jurisdiction. अब देखो, अगर फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टली अफेक्ट करता है राइट ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल, देन इट कैन बी ए सूट ऑफ सिविल नेचर. बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ इंडिया डील विद द पाकिस्तान. अब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान इज द मैटर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दे हैव टू डिसाइड. तो उस पर फिर आप सिविल कोर्ट में सूट नहीं कर सकते कि ये पॉलिसी चेंज करो और ये पॉलिसी लेकर आओ. लेकिन किसी पॉलिसी से अगर राइट किसी का डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा हो, देन ऑब्वियसली इट विल बी फॉल अंडर द jurisdiction of the civil court. That is, it would be a suit of civil nature. Okay. Now take out a case here, that is Dulabhai versus State of MP. Dulabhai versus State of MP, 1968 Supreme Court. It was a 5 judges bench and the judgment delivered by Hidayatullah Justice. now देखो, इस केस में जो मेन पॉइंट है, why we are discussing this case is that in this case it was held that even if there is an express bar upon the jurisdiction of the other civil courts, in certain circumstances the other civil courts still may have jurisdiction.
फॉर एग्जाम्पल से किसी स्टैट्यूट में आपने एक स्पेशल कोड क्रिएट कर दिया है और लिख दिया है कि यही कोड सारे मैटर्स की सुनवाई करेगा। सो बाय राइटिंग दैट अदर सिविल कोड्स का ज्यूरिडिक्शन एक्सक्लूड हो गया, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में अदर सिविल कोड्स में हैव ज्यूरिडिक्शन। अब इस केस में क्या था, इट वाज रिलेटेड टू इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल। अब इनकम टैक्स एक्ट में द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल वाज क्रिएटेड and it was declared that all the matters pertaining to the act will fall under the income tax tribunal. Now one problem arose कि उस act में there was no provision which is provided for। मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे एक्स्ट्रा इनकम टैक्स कलेक्ट कर लिया। सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्स एक्स्ट्रा इनकम टैक्स फ्रॉम यू, then obviously that extra amount has to refund to you. They have to refund you. Now in this act, there was no provision as to if the department has take the extra amount, you can claim it back as a refund from there. तो ऐसा कोई provision नहीं था। अब the issue was कि जब आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाओगे तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल सीधा कह देगा मेरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये मैटर नहीं आता क्योंकि इसका कोई प्रोविजन इस एक्ट में नहीं है। And that is what happened. This person went to the income tax tribunal for the refund for the extra amount which is paid to the government as tax, the extra amount which is given to the department as a tax, उसके refund के लिए गया, and that is refused. His right was refused, and the tribunal held that in our terms of reference this matter does not fall because the Income Tax Act does not cover this situation. So they refused to take the suit. The question is that where will this petitioner will go? So therefore he has to file the civil suit. So he filed the civil suit in the ordinary civil court, and the suit was entertained by the court, and finally Supreme Court approved that and held that if there is a lacuna in the act and a particular remedy has not been provided, then for that particular remedy you can still go to the ordinary सिविल कोर्ट्स। तो उस तरीके कुछ और भी एग्जाम्पल्स बोले उन्होंने इसमें, वो आप लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इफ द स्टैट्यूट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट रेमेडी टू द पार्टीज, देन फॉर दैट पर्टिकुलर रेमेडी दैट स्पेशल कोर्ट विल नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन, द स्पेशल कोर्ट विल नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन एंड ऑन सच मैटर, पूरे पे नहीं, on such matter, that particular matter on which there is no remedy, the special court will not have jurisdiction, and on such matter the ordinary civil court will have jurisdiction to try. On such matters the ordinary civil court will have jurisdiction to try. Then next point, if it is found that the statute itself is unconstitutional, जब ये जो स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो ट्राइब्यूनल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। If it is found that the statute itself is unconstitutional otherwise, then the ordinary civil courts will have jurisdiction. Then write down the third point. If the tribunal under the statute wrongfully refuses to entertain the suit or it grossly violates the principle of natural justice, then also the ordinary civil courts will have jurisdiction. Though in such cases, even an appeal may lie against the order of the court. Means जिस स्टैट्यूट के अंदर एक स्पेशल कोर्ट क्रिएट किया है, अगर वो स्टैट्यूट अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस मैटर पे जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में जाएंगे, बिकॉज ट्राइब्यूनल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और दूसरा, अगर उस स्टैट्यूट में किसी मैटर पर एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड नहीं है और आप जाते हो ट्राइब्यूनल के पास और वो बोलता है कि मेरा टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है। अब टर्म ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट? द मैटर्स विच इट कैन हियर, मतलब मेरे जो लिस्ट है उसमें ये मैटर फॉल नहीं करता और इसलिए मैं ट्राई नहीं करूँगा, इसलिए हम इसको ट्राई नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ जाओगे? गो टू द सिविल कोर्ट। फिर उसी तरीके से एक ट्राइब्यूनल इज ग्रॉसली वायलेटिंग द
principles of natural justice, or is violating the terms of the statute and illegally refuses to take your suit, then in that case one alternative you have is you go in appeal against the order of that court, or you can always go for filing of the civil suit in the normal course. So these are the points the court held in this case. अब एक और केस लिखो आप, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामलिंगम 1985 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी यही पॉइंट था जो पहला पॉइंट था दूलाबाई केस में, इफ द एडुकेट रेमेडीज आर नॉट प्रोवाइडेड यू कैन गो टू द ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट। इसको लिख लो आप, इफ द स्टैट्यूट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट्स रेमेडीज द jurisdiction of ordinary civil court will lie. The jurisdiction of the ordinary civil court will lie. एक और केस लिखो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस अजय सिन्हा। It is 2008 Supreme Court. It was held that any exclusion provision under a statute has to be strictly interpreted and shall be given a real effect. So that you already know कि जो भी कोई भी exclusion provision होगा जो exclude करता है, that to be strictly interpreted, इसको strict interpretation किया जाएगा इसका, ना कि wide interpretation जैसे civil courts में होता है, and shall be given a real effect. So that by that we over with section 9, the main parts. We have discussed the policy and purpose of section 9. We have discussed the policy and purpose of section 9. We have also discussed the meaning of suit of civil nature. We also discussed what is meant by express and implied bar. Next topic we have to discuss is the jurisdiction part. We would start the jurisdiction of civil courts in the next lecture. That's it for this lecture. Thank you.